According to a recent UNDP report, almost 30% of our total population is in the higher education age bracket, aged 15 to 29, and this percentage will continue to rise. The pressure to deliver is intense, with over 65 million young people ready to be trained for marketable jobs. Mismanagement is at its peak, with funding roadblocks, lack of skilled teachers, and limited resources hindering innovation and progress. A radical new wave of disruption is needed for those who wish to learn from cutting-edge technology, those who wish to keep abreast of global developments, and those who will eventually be the movers and shakers of our domestic socio-economic systems. What does this disruption mean for young people restricted by archaic policies? One of the biggest challenges faced by higher education in Pakistan is the gaping divide between skills and content. Students cannot be educated in a vacuum where the content neither addresses real-life challenges nor enriches their experience. Students graduate in overwhelming numbers from our local colleges and spend years in underpaid jobs that don't reflect their qualifications. The fact is, their qualifications don't make them market-ready, don't teach them innovative skills for entrepreneurship, and don't develop their ability to learn on the job. Inequities in our education system are often cited as the culprit. However, even those who manage to go through higher education mostly end up walking away with a degree that symbolizes little more than the stamp it carries. A radical new wave of disruption is needed. Without collaboration with international universities, this scenario may persist. With their enrichment programs, strong linkages with the needs of industry, and growth mindset, international universities have much to offer us. There was a time when qualified faculty from well-reputed international universities were seen teaching, conducting research, and working closely with local faculty and students. Gradually, the trend not only faded but collaborative efforts across borders, including student or faculty exchange programs, became few and far between. Higher education in any country is the mainstay of the economy. A focus on the state-of-the-art buildings that house our colleges and universities will show how skewed the priorities are. Beautiful buildings are seen teeming with life and hope, with young people chatting away. Attend a single class and it becomes obvious how that sense of life and hope gives way to inertia, with the same students staring at the teacher with blank faces, passively listening, distant and dazed. One of the fundamental differences between school-going children and higher or adult learners is that the latter must be convinced of the need to learn, must see real-world meaning in it, and must be able to translate it into something useful for their future. Keeping this in mind when preparing frameworks for policy may help alleviate some of the challenges faced by our higher education graduates. Working backwards from their students' goals, recognizing and supporting their vision of where they want to be in life may be a beneficial exercise for all higher education faculty. Those who have dabbled in online education would know the possibilities are immense. The world is their oyster if students wish to build their skills independently and have learned how to navigate the options available online. This also means many of our students will turn away from local universities as online degrees become more accessible and may, in fact, become digitally savvy much faster than if they were to opt for traditional higher education in Pakistan. If higher education in Pakistan were to stay relevant, there is an urgent need to build teacher capacity and overhaul the curriculum to make it more reflective of skills for the future. Besides tech-fueled learning, we would need to take concrete steps to equip students to present their research at conferences, panel discussions, benefit from mentoring programs, and provide them with job placements and career counseling. Apparently, only 2% of the 247 functional universities in Pakistan provide such opportunities. The Labor Force Survey for 2020 to 21 reported that 37% of our youth aged 15 to 29 are neither in education or training, nor in employment. Sadly, that is 21.8 young people who can be productively engaged in both work and education. Clearly, there is no dearth of labor, nor is the young population averse to learning or working. The fault lies in our inability to plan, execute, and meet the urgent priorities of our economy, which includes developing skills among teachers and vocational trainers, without which there can be no hope of producing a workforce capable of building a nation.
The writer is Senior Manager, Professional Development at Oxford University Press, Pakistan. Published in Dawn, March 25, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. UNDP की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हमारी कल आबादी का तकरीबन 30% 15-29 साल की उम्र के आला तालीम याफ्ता तबके में है और इस फीसद में इजाफा जारी रहेगा। डिलीवरी का दबाव शदीद है क्योंकि 65 मिलियन से ज्यादा नौजवान मार्केट के काबिल मुलाजमतों के लिए तरबियत हासिल करने के लिए तैयार हैं। माली मुश्किलात, हुनरमंद असातिज़ा की कमी और महदूद वसाइल की वजह से बदइंतज़ामी अपने उरूज पर है, जिसकी वजह से जिद्दत तराजी और तरक्की में रुकावटें पैदा हो रही है। इन लोगों के लिए खलल की एक इनकलाबी नई लहर की ज़रूरत है जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से सीखना चाहते हैं, जो आलमी तरक्की से बाखबर रहना चाहते हैं और जो बिलाखिर हमारे घरेलू समाजी और इक्तिसादी निज़ाम के आगे बढ़ने वाले और शेकर होंगे। फरसूदा पॉलिसियों की वजह से महदूद नौजवानों के लिए इस खलल का क्या मतलब है? पाकिस्तान में आला तालीम को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक महारत और मवाद के दरमियान फ़र्क है। तलबा को एक खला में तालीम नहीं दी जा सकती है जहां मवाद ना तो हकीकी ज़िंदगी के चैलेंजों को हल करता है और न ही उनके तजुर्बे को बेहतर बनाता है। तलबा हमारे मकामी कॉलेजों से भारी तादाद में ग्रेजुएट होते हैं और कम तनख्वाह वाली मुलाजमतों में सालों गुजारते हैं जो उनकी काबिलियत की अक्कासी नहीं करते। हकीकत यह है कि उनकी काबिलियत उन्हें मार्केट के लिए तैयार नहीं करती है, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जदीद महारतें नहीं सिखाती है और मुलाजमत पर सीखने की उनकी सलाहियत को तरक्की नहीं देती है। हमारे तालीमी निज़ाम में अदम मुसावात को अक्सर मुजरिम करार दिया जाता है। ताहम यहाँ तक कि जो लोग आला तालीम हासिल करने में कामयाब रहते हैं वो भी ज़्यादातर एक ऐसी डिग्री के साथ चले जाते हैं जो इसकी महर से कहीं ज़्यादा की अलामत है। खलल की एक इनकलाबी नई लहर की ज़रूरत है। बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों के साथ ताउन के बगैर ये मंजरनामा बरकरार रह सकता है। अपने अफजूदगी के प्रोग्रामों, सनत की ज़रूरियात के साथ मजबूत रवाबित और तरक्की की ज़हनियत के साथ बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों के पास हमें पेश करने के लिए बहुत कुछ है। एक वक्त था जब मरूफ बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों के काबिल असातिज़ा तदरीस, तहक़ीक़ और मकामी फैकल्टी और तलबा के साथ मिलकर काम करते नजर आते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान न सिर्फ ख़त्म होता गया बल्कि सरहदों के आर पार मुश्तरका कोशिशें बशमूल तलबा और फैकल्टी के तबादले के प्रोग्राम बहुत कम हो गए। किसी भी मुल्क में आला तालीम मईशत की बुनियाद होती है। हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की जदीद तरीन इमारतों पर तवज्जो मरकूज करने से पता चलेगा कि तरजीहात कितनी मुतज़ाद हैं। खूबसूरत इमारतें जिंदगी और उम्मीद से भरी हुई नजर आती हैं, नौजवान बातचीत करते नजर आते हैं। एक ही क्लास में शिरकत करें और ये वाज़े हो जाता है कि जिंदगी और उम्मीद का ये एहसास किस तरह जमूद को जन्म देता है जब वही तालिब इल्म खाली चेहरों के साथ उस्ताद को घो रहे हैं, गैर फाल तौर पर सुन रहे हैं, दूर और हैरान हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों और आला बालिग सीखने वालों के दरमियान बुनियादी फ़र्क यह है कि मुअख्खर और ज़िक्र को सीखने की ज़रूरत का कायल होना चाहिए, इसमें हकीकी दुनिया के मानी देखना चाहिए और इसे अपने मुस्तक़बिल के लिए मुफीद चीज़ में तर्जमा करने के काबिल होना चाहिए। पॉलिसी के लिए फ्रेमवर्क तैयार करते वक्त इस बात को ज़हन में रखने से हमारे आला तालीम के ग्रेजुएट्स को दरपेश कुछ चैलेंजों को कम करने में मदद मिल सकती है। अपने तालिब इल्मों के मकासद से पीछे काम करना, उनके विजन को पहचानना और उनकी हिमायत करना कि वो ज़िंदगी में कहाँ रहना चाहते हैं, तमाम आला तालीमी फैकल्टी के लिए एक फ़ायदेमंद मश्क हो सकती है। जिन लोगों ने ऑनलाइन तालीम में दिलचस्पी ली है वो जानते होंगे कि इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अगर तलबा आज़ादाना तौर पर अपनी सलाहियतों को बढ़ाना चाहते हैं और ऑनलाइन दस्तयाब इख्तियारात को नेविगेट करने का तरीका सीख चुके हैं तो दुनिया उनकी सीप है। इसका मतलब ये भी है कि हमारे बहुत से तालिब इल्म मकामी यूनिवर्सिटियों से दूर हो जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन डिग्रियां ज़्यादा काबिल रसाई हो जाती हैं और हकीकत में वो पाकिस्तान में रिवायती आला तालीम का इंतखाब करने के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज़ी से डिजिटल तौर पर समझदार हो सकती है।
अगर पाकिस्तान में आला तालीम को बरकरार रखना है तो असातिज़ा की इस्तेदादकार बढ़ाने और निसाब में तब्दीली लाने की अशद ज़रूरत है ताकि इससे मुस्तकबिल के लिए महारतों की मज़ीद अक्कासी की जा सके। टेक्नोलॉजी से चलने वाली तालीम के अलावा हमें तलबा को कॉन्फ्रेंसों, पैनल मुबाहसों, मुशावरती प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाने और उन्हें मुलाजमत की जगह और करियर काउंसलिंग फराहम करने के लिए अपनी तहकीक पेश करने के लिए तैयार करने के लिए ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत होगी। बज़ाहिर पाकिस्तान की 247 फ़ाल यूनिवर्सिटियों में से सिर्फ 2% ही ऐसे मौक़े फराहम करती हैं। लेबर फोर्स सर्वे बराए 2020-21 में बताया गया है कि हमारे 15-29 साल की उम्र के 37% नौजवान न तो तालीम और तरबियत में हैं और न ही रोज़गार में हैं। अफसोस की बात यह है कि ये 21-8 अहम नौजवान हैं जो काम और तालीम दोनों में पैदावारी तौर पर मशगूल हो सकते हैं। जाहिर है कि मजदूरों की कोई कमी नहीं है और न ही नौजवान आबादी सीखने या काम करने के खिलाफ है। गलती हमारी मईशत की फौरी तरजीहात की मनसूबाबंदी, अमल दरामद और उन्हें पूरा करने में हमारी नाअहली में है, जिसमें असातिज़ा और पेशा वराना तरबियतकारों के दरमियान महारतों को फ़रोग़ देना शामिल है, जिसके बगैर एक कौम की तामीर के काबिल अफरादी क़ुव्वत तैयार करने की कोई उम्मीद नहीं हो सकती है। मज़मून निगार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान में प्रोफेशनल डेवलपमेंट के सीनियर मैनेजर हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 25 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.